हाँ, क्या हाल है भाई? आगे सब लोग, हाउस एवरीवन फीलिंग? अच्छा परफॉर्मेंस था यार. इट वाज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. अच्छा लगा मैच देख के, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो मच नीडेड विन. मैं थोड़ा हाउस एवरीवन डूइंग? क्या लगता है भाई लोग, कैसा लगा सबको मैच? आज तो कम लोग आएंगे. आज हम लोग ने मैच जीत लिया है तो आज तो कम लोग आएंगे, बट चलेगा. ऑल राइट भाई. सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड से. बहुत क्रिटिसाइज किया उसको, बहुत सारी बातें उसके बारे में बोली, बट टुडे ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. आई थिंक आई थिंक ही डिजर्व्स ऑल द क्रेडिट टुडे. आज बहुत अच्छा खेला है और क्रेडिट देना पड़ेगा वेयर इट बिलोंग्स. तो ट्रेंट को क्रेडिट तो बनता ही है यार. अब बहुत ही बढ़िया खेला है आज वो, और मजा आया यार आज का मैच देख के. मजा आया, मतलब शुरू से हमने प्रेशर बनाया. इट हेल्प्ड कि रेंजर्स वर काफी कम एडवेंचरस थे वो लोग. मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहा था रेंजर्स को, मतलब थोड़ा ये मैच में ज्यादा टफ एक्सपेक्ट कर रहा था, बट रेंजर्स वर लेस एम्बिशियस. बट एनीवे, दैट डज नॉट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम अस. मतलब आई थिंक अगर आप सारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देखोगे, ट्रेंट से अगर शुरू करते हैं, तो ये मैच से ट्रेंट को फायदा बहुत होगा इन टर्म्स ऑफ हिज कॉन्फिडेंस. बहुत 7वें मिनट में उसने गोल किया और उसके बाद से ही डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग. तो एनफील्ड के सामने, एनफील्ड अंडर द लाइट्स, एक एक अच्छा परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा. आई थिंक दैट इसके ऊपर डेफिनेटली हमको बिल्ड करना चाहिए यार. राइट, तो ये बहुत ही, मतलब मैं काफी सही लगा. राइट. भैया, I could be wrong, but I think in the end we played just like 4-3-3. We started getting knocks from visiting team. नहीं यार, देखो वैसी बात नहीं है. क्या होता है कि जब आप, मतलब जब स्कोर 2-0 हो गया ना, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा हम काम डाउन हो गए इन टर्म्स ऑफ हमने हमने उतना ज्यादा प्रेशर डालना कम कर दिया. ऋतिक हैज अ बिग स्माइल ऑन हिज फेस. तो इसलिए इट इज नॉट सो मच अबाउट अ 4-3-3. सी देखो क्या होता है, दूसरी टीम को भी कुछ चांसेस तो मिलेंगे ना, और वो लोग टुवर्ड्स द एंड, हम थोड़ा सिट बैक कर रहे थे और वो थोड़ा आगे आ रहे थे, तो वही चीज है. आई डोंट थिंक इट हैज टू डू विद परफॉर्मेंस. क्या बोलता है ऋत्विक? हैप्पी? फाइनली मैंने बोला था 2-0 और 3-0. मतलब आजकल मतलब प्रेडिक्शंस सही, मतलब इट इज हाँ, कमिंग ट्रू. तो मेरे को केयरफुली वर्ड्स इसलिए पिक करना पड़ेगा. एग्जैक्टली इसलिए अभी तू फालतू नहीं बोल सकता है. मतलब अभी तेरा बात सही हो रहा है, तो यू हैव टू बी केयरफुल इनटू. अब तू क्या क्या बोल रहा है उसको लेके. यार वीडियो एग्जैक्टली. लाइक करो यार. 50 लोग देख रहे हो, सिर्फ 10 लाइक हैं. और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब करो यार. मतलब क्या कर रहे हो? मजा कैसे आएगा जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे? क्या बोलता है ऋत्विक? तू बोल, तब तक मैं आई जस्ट पुट इट अप ऑन इंस्टाग्राम एज़ वेल. मस्त मस्त परफॉर्मेंस आई फील. मतलब जैसे हमने डिस्कस किया था, उस लाइक 4-4-4-2 या 4-4-2-4. आउट ऑफ पोजीशन व्हेन रेंजर्स वर बिल्डिंग आउट फ्रॉम द बैक. हम 4-3-3 था. मतलब वी हैड वन ऑफ आवर अटैकर्स गो वाइड. आइदर इट वाज डियास ऑन द लेफ्ट or as like a left center midfielder, or sometimes it was Salah as like a right center midfielder. So Trent was playing actually where he was thriving at. मतलब ऐसे randomly he was in like going into midfield, वैसा वैसा. तो it was like really well executed. I think Klopp ने आज he was bang on and this is what we expect from Klopp. यही चाहिए बस. And I think it's a really good performance and something that we could carry towards to the weekend. I mean, don't get me wrong, matlab, Rangers were absolutely terrible, and Yeah. but this is expected. This was expected from us. The scoreline could have been like much bigger if Nunes had a little bit of composure. Lekin Yeah. I hope he cashes his XG against Arsenal. अच्छा, नूनेस पे हम लोग आएंगे ऋत्विक थोड़ी देर में. बट टैक्टिकल एंगल से तू क्या बोलेगा? व्हाट इज इट दैट हेल्प ट्रेंड टुडे तेरे हिसाब से? I think one of the main things that we did was key. The Rangers had like a five at the back, and they were trying to push with their wing backs high and also their wingers. So they would have ideally tried to double up on that side हम्म. with them. But हमें जब बॉल मिलता था, they didn't really press well.
So that was one of the main issues. And we really started the game, without any pressure, and out from the back as well. We played really well. So we didn't actually have a lot of missed passes initially in the first 20-30 minutes, which is really great. Like in most importantly, we had Henderson, Thiago as like the two midfielders with four हाँ. attackers up front. So 4-2-4 था कभी कभी initially, and either Henderson or Trent, one of them were disciplined. Like Hmm. either of them were very disciplined. So if Henderson was moving ahead, Trent would like probably sit back and like form the three with Matip, Van Dijk, and like he would distribute the ball from there. कभी कभी long ball मारता था बहुत बढ़िया. And sometimes when Trent moved forward, Henderson used to drop back, and this was actually a very welcome sight to see. Because normally Henderson's discipline is what we question हाँ. recently. So this is a huge performance for him too. मतलब मैं एक बात बोलूं, आज के गेम में ना मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लगी कि शुरू से द माइंडसेट वाज एक्सट्रीमली पॉजिटिव. मतलब एक लगा नहीं कि वी आर कमिंग ऑफ ऑफ सच अ बैड पैच ऑफ गेम्स. तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मतलब वो चीज को दिमाग में नहीं हम लोग ने डाल दिया कि क्या बोलते हैं कि मतलब ये खराब है, हालत खराब है या ये सारी चीजें. हम बहुत मतलब एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट से खेले मेरे हिसाब से ना ब्रो. आई थिंक टुडे ट्रेंट तो मैन ऑफ द मैच, मतलब मैं बोलूंगा 100% ट्रेंट वाज मैन ऑफ द मैच. बट आई थिंक वन मोर प्लेयर जिसका मैं नाम लूंगा हु वाज ब्रिलियंट टुडे वाज वाज लुइस डियाज. लुइस डियाज के वजह से दैट होल एक्सिस जो था ना, उसके वजह से बहुत अच्छा वर्क किया है. मतलब ही वाज अनलकी टू नॉट गेट अ गोल, बट आई थिंक ही वाज ब्रिलियंट. क्या बोलता है तू? 100% भाई. मतलब this is one of the main positives that we can take out of the season so far. कि Luis Diaz का performances, even when we struggled, he's been trying to carry this team. तो आज similar performance था. I mean, because in the first half you could see a lot of interchanges in the front four. मतलब Diaz कभी कभी center आता था, while you know Nunes went to the left side. Sometimes Nunes went to the right, and Diaz was going more central too. And I think one of the main reasons why Diaz thrived today was he Jota would occupy the spaces in front of Yeah. the centre backs. So Rangers centre back didn't push high. They kind of wanted to stay compact at times. So we had a lot of spaces, and Jota was really picking up those spaces and receiving the ball. उसके बाद वो ट्रिगर बन जाता था, प्रेसिंग ट्रिगर फ्रॉम सेंटर बैक्स, एंड दिस एक्चुअली फ्रीड अप Diaz, helped him make some runs. But even when Diaz had the ball, right, he made things happen. मतलब कितना take on stars, and winning that penalty itself that was huge. Like he just dribbled past like 2-3 defenders, which is quite brilliant in a tight space. यार आई थिंक दैट वी बहुत सारे सिचुएशंस में तो आई वुड से दैट हम बहुत ज्यादा अनलकी थे कि हम लोग ने और गोल्स नहीं मारा. आई थिंक उनका कीपर वाज समथिंग एल्स मैन. वो जो उसने खास करके उसने जो जोटा का जो सेव निकाला, ओ माय गॉड, दैट वाज मतलब इट वुड मेक एलिसन प्राउड मैन, द काइंड ऑफ इंस्टिंक्टिव सेव इट वाज. बट आई थिंक जो तू बोल रहा है ना, जो थोड़ी देर पहले तूने बोला, एकदम सही बात बोली कि ये मैच में सबका एक रोल था. एंड आई थिंक एवरीबडी, सबने इतने अच्छे से उसको एग्जीक्यूट किया ना, अपना अपना जो रोल है. जैसे हम लोग ने ऑब्वियसली अभी डियाज और जोटा की बात की. साला आई थिंक वाज ब्रिलियंट टुडे. आई थिंक मतलब ब्रिलियंट तो चल मतलब थोड़ा सुपरलेटिव हो जाता है, बट आई थिंक ही जो उसको रोल दिया था उसमें वो बहुत अच्छा खेला है. आई थिंक उसके वजह से नूनेज को बहुत ज्यादा ये मिला. एक मेरे को आई थिंक नूनेज का परफॉर्मेंस टुडे वाज वेरी गुड, राइट. एंड आई थिंक दैट मेरे को बस एक चीज लगती है कि नूनेज को देख के ना, मतलब अगेन प्रैक्टिकल एंगल तो जो चीज वो है ही. आई पर्सनली फील वो थोड़ा हरिड शॉट्स लेता है एट टाइम्स, विच इज आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ मेंटल थिंग, क्योंकि उसका वो रेड कार्ड हो गया था तो ही वांट्स टू इंडियर हिमसेल्फ टू द एनफील्ड क्राउड. मतलब थोड़ा जैसे फॉर एग्जांपल एक जो उसने शॉट लिया था डायरेक्टली कीपर के पास मारा उसने.
ही कुड हैव इजीली टेकन वन मोर टच एंड स्लॉटेड इट फार पोस्ट पे, बट उसने वो नहीं किया। बट ऐसे बहुत सारे, मतलब कोई कोई तो यार मैकग्रेगर ने उसके बहुत जबरदस्त सेव निकाले। नूनेस के बारे में क्या बोलेगा, कैसा लगा तेरे को नूनेस का परफॉर्मेंस? I think this was probably 7 out of 10 परफॉर्मेंस from उन्होंने 7 out of 10 बस इसीलिए सॉलिड क्योंकि परफॉर्मेंस। शॉट्स का अगर एक गोल मारता तो आई वुड हैव गिवन हिम 9 out of 10 क्योंकि वो थोड़ा रश था एंड इवेंचुअली ही वाज ग्रोइंग अ लिटिल बिट इम्पेशेंट मतलब एंड में बिफोर ही लेफ्ट द फील्ड it was I kind of felt he was probably a little bit impatient and you know a bit lost. But overall, 7 out of 10, like in solid 7 out of 10, because he was making really good runs in behind the हम्म। Rangers defense. वही सबसे important था. He was like drifting wide, and when he had the ball, normally people were like memeing him on his first touch and normal his touches basically, but he kind of really did well. Sometimes he did, matlab, he dropped deep and like linked up play with the other three in the front four. So I think overall बहुत सही गेम था उसका and मतलब शॉट्स मारे आज वही his XG today is high because he got a lot of shots in good areas. तो थोड़ा रश था. I think I think the simplest chance for him probably was the one where he could have pushed it to the far post like you said. वही वही Hmm. वाला, उसमें वो थोड़ा हरिड हो गया भाई, वो बेसिकली उसने थोड़ा सा टाइम नहीं लिया। बट लेट्स टॉक अबाउट द बिगेस्ट थिंग भाई, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द चेंज्ड फॉर्मेशन? क्या लग रहा है, मतलब इज दिस समथिंग दैट वी शुड कंटिन्यू विथ, कि मतलब ये रेंजर्स था? बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट ऋत्विक, रेंजर्स वर कंप्लीटली, कोई एम्बिशन शो नहीं किया उन्होंने। लास्ट का 5-6 मिनट भी नहीं है, लास्ट का 3-4 मिनट छोड़ के कुछ भी एम्बिशन शो नहीं किया। तेरे हिसाब से ये फॉर्मेशन अब हमको प्रीमियर लीग में खेलना चाहिए कि इट इज टू रिस्की फॉर अस? It depends on the opposition. By I think if we are playing someone who's probably going to sit deep and trying to absorb and probably trying to hit us on the counter, हम्म। maybe yes. Like in with against teams that play football, this probably could be a bit risky because we just have the two in middle. So especially against Arsenal, I think अग्रीड, मैं वही बोल रहा था कि it's आर्सेनल के good. अगेंस्ट आई डोंट थिंक इट विल बी अ गुड आइडिया। वही बोल बोल वो सॉरी कंटिन्यू। that's what Dakshas also said in the comment. मतलब आर्सेनल के साथ ये नहीं चलेगा क्योंकि midfield is fluid. Exactly, and I think because lots of space है central areas में, so हम्म। because sometimes we kind of had all the attackers caught up way up ahead and midfielders here, but क्योंकि attackers आज बहुत मतलब बहुत hard working था, they actually helped out the midfield whenever we हम्म। lost the ball. They were quick to press and win the second balls. Most importantly, winning the second balls is हाँ, something that we haven't done this season at all, and that's where we struggled. Aj we completely dominated in that regard. आज आज वैन डाइक वाज अप फॉर इट, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा वैन डाइक को देख के, बिकॉज ही वाज अप फॉर इट। मतलब वो, मतलब टू बी ऑनेस्ट, रेंजर्स ने उतना ज्यादा कुछ मतलब ट्रबल नहीं किया। आई डोंट थिंक एलिसन हैड टू मेक, लास्ट में उसने जो एक शॉट बचाया दैट वाज द ओनली सेव आई थिंक ही हैड टू मेक, Hmm. अदरवाइज उतना ट्रबल नहीं किया। बट वैन डाइक जब भी शुरू शुरू में, शुरू का 10-15 मिनट में जब बॉल लूज कर रहे थे, तो वैन डाइक वाज लाइक कम ऑन, मतलब ही वाज बीइंग वेरी वोकल, व्हिच इज व्हाट आई लव टुडे। मतलब देखो यार देख, ऑनेस्टली इट इज टू अर्ली टू से कि वी हैव सीन समथिंग फॉर श्योर, बट आई थिंक ये, इस पे हम लोग बिल्ड तो डेफिनेटली कर सकते हैं। दिस वाज नॉट लाइक, मैं इसको, जैसे बोनमत के साथ हम लोग 9-0 जीते थे, लेकिन वो बोनमत था और वो समझ आ रहा था कि मतलब वो बात नहीं है यहाँ पे। एंड नॉट टू से कि रेंजर्स वर वेरी गुड और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट आई थिंक दैट बेसिक्स सही किए। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ था कि वी कैपिटलाइज्ड ऑन देयर मिस्टेक, उसके वजह से गोल हो गया। If anything, this score line probably flatters Rangers आज के मैच के बेसिस पे। तो वो 100%. मेरे को बहुत अच्छा लगा कि in terms of basics we were very good. Hmm. Yes, What about 100%. Semikas? मतलब I am a little bit frustrated with him because of the way. I mean, he was a bit dodgy in the final third.
लेकिन ओवरऑल it was like a very solid performance once again. मतलब मेरे को लगता है कि he could have probably taken his chance and maybe probably staked his claim as the starter instead of Robo. लेकिन अभी लग रहा है कि Robo is probably going to come back in. But I mean, I'm not probably saying that he was bad or anything. He was No, solid no, of course properly, not. but a little bit more decisiveness in the final third was kind of expected from him because we know how good he can be when he's on song. So वो थोड़ा हाँ, I felt was missing, but that final clearance, that's 10 out of 10 thing. मतलब बट उतना हाँ, अग्रीड। controlled. वो वो ना कितना, इट वाज द 87th मिनट, 88th hmm, मिनट। 86th or वो something I guess. हाँ, वो ना बहुत स्ट्रेस हो जाता। अगर वो 86 मिनट में वो गोल हो जाता ना, तो फिर वो 4 मिनट और फिर एक्स्ट्रा टाइम 4 मिनट, मतलब वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता। बट आई थिंक दैट फाइनल थर्ड में तो तू जो बोल रहा है वो सही बात है, बट आई थिंक ही वर्कड वेरी हार्ड विद लुइस डियाज। Hmm, वो hmm. दोनों का मेरे को केमिस्ट्री आज सही लगा, इन टर्म्स ऑफ जो जो वो दोनों करने की कोशिश कर रहे थे, वो मेरे को सही लगा। डू यू थिंक व्हेन इज रॉबो बैक बाय द वे? I hear he will be back this weekend or probably next weekend. I'm not sure. This weekend, This assuming, weekend, okay, assuming Robo is back this weekend, do you think he starts versus Arsenal or Simeka starts? I think we should probably start Chimikas. I think we Simicast. should, and also probably tactically as well. Don't go with a 4-2-4. Probably go to 4-3-3, but the solid 4-3-3 that we were succeeding with last season. Not the one Hmm. where we have the fullbacks work as inverted fullbacks and mess things up in the wide areas. So गेम का एंडिंग क्या लगा तेरे को ऋत्विक? मेरे को लगा कि एंडिंग में थोड़ा सा, मतलब किसी ने पॉइंट आउट भी किया, बट आई थिंक दैट वाज मोर ऑफ अस ट्राइंग टू सिट बैक एंड थोड़ा हमारा एनर्जी कम हो गया था रादर देन एनीथिंग एल्स। तेरे को क्या लगा, गेम क्लोज कैसे किया हमने? I think थोड़ा सा fatigue था because they brought on fresh faces and the players that we brought on were Milner, James Milner and Fabinho. So I mean Milner had like one or two good crunching tackles end में and that's classic Milner. Yellow card मिल Yeah. जाता and अगर I mean it's either a yellow card or a very crunchy tackle. बस Milner का बस extremes में चलता है हमेशा. तो I मिलनर हाँ थोड़ा तो I स्ट्रेस think होता है ब्रो। मिलनर मिलनर जब अब आता है ना, तो थोड़ा स्ट्रेस होता है मिलनर को देख के कि भाई मतलब कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। मेरे को सबसे ज्यादा स्ट्रेस मिलनर का वही लगता है। Fabinho did not start this game. हाँ, थियागो ऑफ कोर्स अच्छा खेला। आई थिंक हेंडरसन आल्सो प्लेड वेल। देख, हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं जब क्रिटिसाइज करना चाहिए, exactly. और जब क्रिटिसिज्म होता है तो हम बिल्कुल क्रिटिसाइज करते हैं। और हम क्या, मतलब जब लिवरपूल प्लेयर्स इतनी सी भी गलती करते हैं तो बात का बतंगड़ बनता ही है। आई थिंक ही वाज वेरी गुड टुडे, बट आर्सेनल के अगेंस्ट, और उसके ऊपर हम लोग और बात करेंगे थोड़ा डिटेल में, अभी तो है टाइम, बट आर्सेनल के अगेंस्ट हमको अप्रोच पूरा बदलना पड़ेगा यार। दिस अप्रोच विल नॉट वर्क अगेंस्ट आर्सेनल। फॉर वन, आर्सेनल इज अ मच मोर एडवेंचरस टीम। आई थिंक इंडिया इंडिया बोल रहा हूँ, इंग्लैंड में मैनचेस्टर सिटी एंड आर्सेनल आर द राइट नाउ द टू, वो सबसे दो अच्छी टीम है, तो उनको आई थिंक हमको दूसरे तरह से अप्रोच करना पड़ेगा। बट लेट्स टॉक अबाउट ट्रेंट ब्रो। मतलब हम लोग ने मतलब बहुत चैट में, ही इज अ चैंपियनशिप डिफेंडर, ही इज दिस, ही इज दैट, और मतलब जब गाली देनी होती है तब तो एक मतलब एक ट्विटर पे 2 मिनट का क्लिप देख के गाली दे देते हैं लोग, राइट? आई थिंक ही वॉज द कैप, मतलब वो लीड कर रहा था कितने सारे अटैक्स ब्रो। मतलब अगर तू देखेगा तो अ लॉट ऑफ अटैक्स, ही वाज द गाय कॉलिंग पीपल इनटू पोजीशन। ही वाज, ऑफ कोर्स उसने वो फ्री किक मारा। आई थिंक वी वर एक्सट्रीमली लकी, अनलकी कि हमने ओपन प्ले से एक भी गोल नहीं मारा, एंड इट इज मोर देन अस, इट इज क्रेडिट टू मैकग्रेगर। बट ट्रेंट के बारे में क्या बोलता है यार? हम तो बहुत, मतलब लोग क्रिटिसाइज तो बहुत करते हैं, लेकिन अब देख एक भी कमेंट नहीं है अबाउट ट्रेंट। वही यही प्रॉब्लम है ना, मतलब
I've seen like I'm in like a lot like a few WhatsApp groups भी जहाँ पे ट्रेंड को हमेशा मतलब गाली देता है लोग, like हम्म even like a very small mistake, even if that's not his mistake and we concede, ट्रेंड के ऊपर डाल देता है लोग. हम्म So आज कुछ नहीं था, मतलब आज absolutely nothing because उसका uh, मतलब डिफेंसिव परफॉर्मेंस भी आज सॉलिड था. रायन केंट इज नॉट a very easy winger to deal with. He is a bit tricky राइट at times. लेकिन आज he was completely ineffective. And I think one of the changes that I saw in Trent आज was he was a bit more cautious. हम्म तो वो हाई प्रेस करने नहीं गया ज़्यादा आज. करेक्ट Second, I think when he was like doing like he was having one-on-ones with Kent, he didn't allow Kent to get wide too much. He waited for support to come, and when he had support, he closed down the wide areas. So even when Kent would move inwards, he knew that there was people to cover him. So हम्म cover Trent, sorry, Kent, I mean. So आज उसका defending I would say was on the right track, and this is what I think we need to see more of him. तो उसका डिसीजन मेकिंग आज बहुत सही था डिफेंसिवली टू. तो I hope this is the start for him. I mean, I saw his interview after the game. So he was mentioning, so I think it was Jan Age Fjordfort or वो बंदा है ना, the commentator guy or the guy on Twitter who keeps on tweeting about Liverpool. Jan Age for Fjordfort ऐसा कुछ. या Yeah, yeah. So he was interviewing. Was it him or Peter Schmeichel? I forgot. It's either him or Peter Schmeichel. But हम्म they were interviewing Trent, and Trent kind of said that he admitted that he had a slow start to the season, but he's हम्म hoping that he can pick up on this performance. And he was talking like a lot of things, tactical stuff as well. He said this 4-4-2 kind of suited him more to, and like stick back to the basic 4-4-2 so that they're like more compact defensively. यार ट्रेंट का ना मतलब अगेन ऑब्वियसली ट्रेंट का मतलब इस सीजन तो हमने बहुत बात की है ट्रेंट के बारे में. अ लॉट ऑफ द क्रिटिसिज्म दैट ही हैज गॉट इज इवन डिजर्व्ड, बट आई फील दैट ट्रेंट का इशू जो है इस सीजन, इट हैज मोर टू डू विथ हिज कॉन्फिडेंस रादर देन कि फटीग है कि एबिलिटी है. क्योंकि ट्रेंट मतलब एक चीज है कि ट्रेंट डिफेंड नहीं करता है. अब ट्रेंट का डिफेंसिव गेम इज नॉट एज ग्रेट एज अ लॉट ऑफ अदर डिफेंसिव माइंडेड फुलबैक्स. ये कुछ नया नहीं है. अब उसके आसपास के सिस्टम इश्यूज हो रहे हैं अभी तो. मतलब अभी हमने एक ही गेम देखा है जिसमें वी आर डूइंग वेल. सो वो दैट हाउ डज ही टर्न दैट अराउंड, बट आई इज अ डिफरेंट कॉन्वर्सेशन. वो आई थिंक उसमें बहुत सारे मैक्रो फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं. बट आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स अबाउट ट्रेंट वाज हिज कॉन्फिडेंस. ये परफॉर्मेंस है उसके कॉन्फिडेंस को बहुत बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा मेरे हिसाब से. अब कोई एंड आई कमेंट रियली, कोई कमेंट्स पे ट्रेंट को डेले अली से कंपेयर कर रहे हैं अरे क्या वो भाई. दीज आर पीपल फ्रॉम ट्विटर, उसको रहने दो, इग्नोर. यू सी द थिंग इज, anyway I don't want to comment. It's not worthy of commenting, Yeah, but let's ignore. yeah. So the point is कि um, उसका कॉन्फिडेंस जो है ना, इस चीज की वजह से उसके कॉन्फिडेंस को बहुत हेल्प मिलेगा. I agree. आई रियली होप ही कैन बिल्ड ऑन दिस. क्योंकि अभी जो नेक्स्ट अपना ऑपोजिशन है आर्सेनल, उसके बाद अगेन वी प्ले रेंजर्स एंड देन वी प्ले मैन सिटी, और मतलब मैचेस थिक एंड फास्ट हैं भाई. अपने को वी नीड ट्रेंड ऑन हिज गेम. इट इज इम्पेरेटिव कि वो अच्छा खेलना शुरू करे. आई थिंक मतलब मैंने 3-4 बार नोटिस किया आज. देयर वाज कांस्टेंट कम्युनिकेशन बिटवीन थियागो एंड ट्रेंट. यस यस. Thiago was like giving Trent instructions repeatedly when there was like a stoppage in between. कभी throw ins हो जाता था तो Thiago was directly communicating with Trent. So ये 3-4 बार मैंने देखा आज. Probably they would have been communicating even more, but that was quite good to see. And even when Trent left the field after मतलब when Gomez came on, at the end I think it was Thiago who came and just gave him a hug and was talking something. And
that was, and this is something that I really love from our players कि उसका सबको पता है कि उसका कॉन्फिडेंस डाउन है, बट they just didn't want to let him, you know, down. और एंड में when Klopp took him off as well, he हम्म deserved the standing ovation, and that was also like quite good to see. यार, ट्रेंड मतलब वही है ना, तू देखा टोन कैसे बदलता है लोगों का इमीडिएटली। द कमेंटेटर, आई डोंट नो, तेरे को उधर तो डिफरेंट, तेरे को ब्रॉडकास्ट आ रहा होगा। इमीडिएटली द कमेंटेटर इज लाइक, ही इज माय फेवरेट लेफ्ट बैक, हाउ कैन यू नॉट सेलेक्ट हिम फॉर कतार, वन फ्री किक। Exactly. And this is why you should not pay too much attention to what is being said on social media, and because it's not, they're just looking for a reaction. Exactly. And this is not to say that Trent has been brilliant throughout this season. He has been terrible. He has been terrible. But this performance deserves credit. 100. Yeah, exactly. I mean, he admitted it himself too, na, that he's Hmm. had a slow start, and today's probably something that he would, you know, try to pick up and take it from here. मतलब अभी next 2-3 weeks is not easy at all. Arsenal, City, and he's going to face more trouble in these two Yeah. games. So I mean, the most important thing for us is that uh, I think the coaching staff, especially Klopp and Linders, they've kind of figured out that where we were, like, you know, having issues. तो इसीलिए Hmm. आज का formation was helpful and we kind of plugged the gaps. I know this is this ranges, तो Hmm. शायद ये false positive हो सकता है. So we have to wait till the Arsenal. Exactly. So we have to wait till the Arsenal game and see how we start that game. The most important thing is we have to set the tone, you know, right from the start. We just cannot allow Arsenal to start the game better than us. That's going to be trouble. Which is the thing is that is मतलब उसके बारे में तो और बात करेंगे ऋत्विक, बात ये है कि वही. that is extremely likely to happen. I राइट, know. आर्सेनल Hmm. स्टार्टिंग द गेम बेटर देन अस, तो वो तो मतलब उसको हम कैसे काउंटर करेंगे, वो एक दूसरा कॉन्वर्सेशन है। मैटिप मेरे हिसाब से सॉलिड था, ज्यादा कुछ था नहीं करने के लिए। वो एक हेडर उसने था. एक उसने हेडर मिस किया, बट मैटिप सॉलिड था। आई डोंट नो, मतलब आई पर्सनली थॉट कोनाटे आज स्टार्ट करेगा और आर्सेनल के अगेंस्ट मैटिप को स्टार्ट करेंगे। बट पता नहीं, मतलब आई थिंक क्लॉप बेसिकली ही वाज नॉट गोइंग फॉर टू मेनी चेंजेस, तो मतलब ऑलरेडी फॉर्मेशन में इतना बड़ा चेंज किया था। एंड में भी I thought probably Klopp could have, you know, given Calvin Ramsey his debut. मतलब बहुत सही रहता, लेकिन हाँ, it's मतलब fine. आर्थर को कब डेब्यू मिलेगा भाई उसका, मतलब आई पर्सनली फील कि आज तो आर्थर को लाना चाहिए था मेरे हिसाब से। बट आर्थर तो यार मैं वही बोल रहा हूँ ना, मेरे को प्रॉपर साउल टू चेल्सी वाला वाइब्स आ रहा है। आई डोंट नो मतलब आर्थर के साथ क्या दिक्कत है, मे बी लेटर ऑन इन द सीजन उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, क्या करेंगे, आई डोंट नो भाई। I'll बट tell you one game where you know he's probably likely to start. Derby County in the Carabao Cup. हाँ, करेक्ट करेक्ट, वो आई थिंक ही इज द वही गेम, वही टाइप के गेम्स में वो स्टार्ट करेगा। बट पर्सनली भाई आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम आर्थर बिकॉज ऑफ पता नहीं, मतलब जिस तरह से डील हुई है, Same. पता नहीं, मतलब जो तूने बोला ना कि ट्रेनिंग टीम को नहीं चाहिए, कोचिंग टीम को आर्थर नहीं चाहिए था, बट हेंडरसन को इंजरी हो गया था, इसके लिए हम लोग लेके आए। साला का परफॉर्मेंस क्या बोलेगा, मतलब फ्रॉम अ टैक्टिकल लेंस उसका क्या रोल था और क्या, आई थिंक दैट साला के वजह से दैट राइट साइड केप्ट टिकिंग। I don't think a lot of people probably will notice it today. लेकिन I think Salah was kind of the metronome for us in attack. हम्म क्योंकि he was actually connecting a lot of plays, and he was really good at carrying the ball, probably tracking out Barisic wide में, and he was, and the हाँ most important thing was that while Darwin was moving out wide, Salah kept on moving inwards, and he was still causing threat to the Rangers centre backs. So I हम्म think आज जो उसका game है, and not just आज, I think this season, something that we'll probably have to accept is that he might be
low output compared to his previous seasons, हाँ. but he's going to be very very influential. And this I think even the new system that we have tried previously and we've been failing in, हम्म. everything depends on Salah. देखो पता है ये दिस इज इंटरेस्टिंग यू से दैट, क्योंकि सीजन का हम लोग ने प्रीव्यू किया था एंड स्टीफन आया था, स्टीफन रेनन बाबू यागू ट्विटर पे, एंड ही आल्सो सेड समथिंग सिमिलर कि ट्रेंट बोल रहा हूँ, साला का रोल शायद इस मतलब नॉट कंप्लीटली, ये सीजन में बहुत सारे मैचेस ऐसे भी होंगे जिसमें साला विल बी इन हिज ओल्ड मतलब अवतार, ही विल ट्राई टू डू व्हाट ही डिड, बट आई थिंक he also said that कि Salah will मतलब not be that running behind output machine that we expect Salah to be, क्योंकि एज और रोल और दूसरे आसपास की चीजें चेंज होती हैं तो वो भी होगा. थोड़े कुछ मैचेस में मे बी हमको ग्लिम्पसेस देखने को मिले इस चीज के, बट एट सम पॉइंट आई अग्री विथ यू, एट सम पॉइंट मे बी दैट काइंड ऑफ अ थिंग we will end up seeing. um, Also, na, I kind of feel that like we've seen Salah right from like 2017. After he was scoring loads of goals, तो loads of goals से अभी creator बन गया, थोड़ा बहुत बहुत create भी करने मतलब करने लगा. He's racking up assist, not just assist, even chances created हो या key passes हो. He's racking up a lot of that in terms of numbers. And hmm, finally now he's even being that link up player. So we're kind of seeing this arc where he's kind of transforming into a complete forward, kind of a hmm. complete forward, which is nice to see. तूने ट्रेंड का कुछ स्टैट्स डाला था, लेट मी पुट इट अप अगेन और उसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं. 82% passes second in game, 82% उसका this is the accuracy I think. Accuracy. Hmm. हाँ. Hmm. Hmm. One chance created, 96 touches, two shots, one goal, two out of two aerial duels, four out of five tackles. Much better. Thought his job was simplified tactically tonight, and he looked much more comfortable. ठीक है. लोग अभी इसकी बात करते हैं थोड़ा ट्रेंड के मतलब डिफेंसिव एट्रीब्यूट्स की, क्योंकि इसके ऊपर बहुत डिबेट हुआ है, एंड इट सीम्स दैट people were very eager to write him off. It almost felt like कि मतलब राइट. अब देखो इसका, इफ यू लुक एट हिज टैकल्स, एंड नॉट दैट टैकल्स शो दैट यू आर अ ग्रेट डिफेंडर, बट व्हाट डिड यू मेक ऑफ हिज डिफेंसिव गेम? Wait, I think today, मतलब जैसे I've said like before a few minutes back, his decision making in defensive situations was spot on. Hmm. मतलब he waited for his cover to come at times, and he didn't. I mean, He he didn't sometimes wait, he didn't commit a give lot, his but station. yeah, and sometimes he kind of rushed the winger, मतलब Kent mostly to Hmm. push like make his decision quicker, and sometimes Kent ended up making the wrong decision and you know again going back in their phase of play build up and Hmm. again passing the ball backwards. So in that sense, it was really good. I think defensively, when you speak about one-on-one, 1v1 situations, I don't think there was like a lot of situations where he was 1v1. Like in one thing that I observed was he was pushing the winger wide rather than and allowing him to come inside. This is an issue at times. Hmm. If he was defending much more deeper, like he wasn't. And one of the main things to note was also he had cover like in the inside parts from Henderson, oh yeah, Matip, and we had someone covering like behind too. Sometimes it was Thiago. So he knew that he had cover, and that's why he wanted to cover the wide area so that the wingers wouldn't go wide. End में एक दो situations था when he kind of made slight I wouldn't say it's a mistake, but obviously it's something that he could have done, like had a better But yeah. decision. But yeah, if I mean overall, solid game from him defensively too, I would say. हाँ देख मतलब आर्सेनल विल टेस्ट हिम मच मोर. तो Martinelli, या तो आर्सेनल तो उसको बहुत ज्यादा टेस्ट करने वाला है कंपेयर टू आज जो टेस्ट हुआ उसका, बट इट इज अ गुड साइन. मतलब इट इज नॉट जस्ट कि मतलब उसने एक फ्री किक मार दिया, दैट वाज द ओनली हाईलाइट. आई थिंक इवन डिफेंसिवली उसने काफी कुछ अच्छा किया.
और आई होप दिस कैन कंटिन्यू। तो वही यार इफेक्ट, हाँ बोल। नहीं, वही कल गैरी नेविल का एमएनएफ एनालिसिस था, when he completely dissected like Trent's game and what probably he has to do, and Neville kept on mentioning कि Trent does all the incredible stuff that no one else can't do. It's just the basics that he needs to get it right, and he will get it right at some point. हम्म। तो बस 23 साल का बंदा है, and you're writing him off already, like 23-year-old. वही प्रॉब्लम है लोगों के साथ. हाँ हाँ, I was a little disappointed today कि नूनेस को गोल नहीं मिला, क्योंकि he did very well। तूने देखा वो कितना लेफ्ट में भी और राइट में भी ड्रिफ्ट कर रहा था, तूने ध्यान दिया उस बात पे? Exactly. वही मतलब he was, the most important thing was कि he was actively trying to, you know, gel बी into the इन्वॉल्व। system. मतलब flow था बहुत बढ़िया सा. At certain points when he was playing like in the central areas, he was dropping deeper to connect, facing like facing away from goal, and मतलब उसका sometimes first touch सही था, and then he would immediately switch passes, and हम्म। sometimes he was trying to rush passes, trying to get us a good counter attacking situations. लेकिन sometimes वो pull नहीं हुआ, लेकिन it's fine. But overall, I would say this is a very positive sign from Nunez. Goals आएगा 100%. Just बस थोड़ा हाँ wait मतलब करना है. उस यू लुक एट हिम एंड यू थिंक कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर ही स्टार्ट स्कोरिंग। वो तो डेफिनेटली, मतलब फॉर आवर सेक वी होप दैट इट इज सूनर देन लेटर। बट यार 3 बज गए हैं, तो बहुत ज्यादा लंबा कंटिन्यू नहीं करते हैं। और मतलब ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। ट्रेंट, अकॉर्डिंग टू यू, मैन ऑफ द मैच दिस वीक? 100% वही. It's for Trent because he had like a solid game. I would say 9.5 out of 10. हम्म। बट आई थिंक साला को दिया प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड। It's fair. मतलब साला का भी बहुत बढ़िया गेम था. I think Trent was like a bit unlucky because उसका 2-3 immense through balls and crosses था, which I mean there was no one to eventually meet, but they were like really good. हम्म। So अगर वो किसी ने मतलब हेड किया होता या चांस, if someone would have converted that, maybe he would have. But it's fine. I think 9 out of 9.5 for Trent, and same for Salah too. Salah had an immense game. I think it's ironic that in a game that we played so well, हमने 2 set piece से गोल मारा। All credit goes to McGregor. That guy was immense. I think overall man of the match उसको दे दिया होता तो मेरे को उतना बुरा भी नहीं लगता, right? मैकग्रेगर नॉर्मली बहुत मतलब अनकन्विंसिंग कीपर है. मतलब I was really shocked to see him on like god mode आज. मतलब इतना घटिया कीपिंग करता था मतलब for the last 1 year, and he Yeah. suddenly turned into मतलब leviashing आज. वो तो हमारे साथ होता ही है ना, मतलब हर कीपर को हमारे साथ ही माता आती है। बट भाई लोग, थैंक यू हुएवर जॉइंड इन। काफी मजा आया बात करके। अभी ये जो मैच था, लेट्स नॉट लेट्स नॉट प्ले डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस विन, क्योंकि नेपोली 6-1 जीता है एक्स के साथ, राइट? तो नेपोली आर ऑन एन एब्सोल्यूट रैम्पेज। ठीक है, वो भी आयक्स ने लीड लिया था वो मैच में। तो नेपोली 3 games 3 wins, वी आर सेकेंड इन द टेबल नाउ। हमको उनके ऊपर ठीक है, यहाँ पे नंबर ये स्टेज पे गोल डिफरेंस इज नॉट अ बिग थिंग, बट नेपोली आर रैम्पेंट एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट हम उनके आसपास रहें, Exactly. right? Because we still have to play Napoli in one game. We have to play Ajax away, and उसके पहले रेंजर्स भी अवे ही। तो मैचेस काफी इंपॉर्टेंट हैं, मैचेस काफी बड़े हैं, और उसके पहले तो वी हैव टू नाउ गो एंड प्ले वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द लीग राइट नाउ, व्हिच इज आर्सेनल। The तो two best teams in the league अभी next consecutive weeks हाँ, में. एग्जैक्टली, कंसेक्यूटिव वीक्स में वी प्ले द टू बेस्ट टीम्स इन द लीग। आर्सेनल एंड मैन सिटी दोनों डेंजरस टीम्स हैं। और मतलब हमको ये परफॉर्मेंस अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। लेट्स नॉट टेक क्रेडिट अवे, एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम द बॉयज, बट इसके ऊपर हमको बिल्ड करना पड़ेगा। ये मैच, मतलब इस चीज के ऊपर हमको करना पड़ेगा कि इस चीज से हम आगे जा रहे हैं। अदरवाइज ये फ्लैश इन द पैन वाला सीन हो जाएगा बर्नमouth के जैसा, ठीक है?
तो वो नहीं चाहिए। बाकी थैंक यू एवरीवन हूएवर जॉइंड इन। 3:15 बज गए हैं, बहुत थक गया हूँ मैं, ठीक है। आई थिंक यू कैन सी इट इन ऑन माई फेस नाउ, ठीक है। तो बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आर्सेनल के लिए बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, और वैसे भी कंटेंट तो भाई मैंने इन द मॉन्क पे नहीं रुकने वाला है। तो बाकी हैव अ गुड नाइट, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, चीयर्स एंड अप द रेड्स। रुक जा ऋत्विक।